Hello, good afternoon, everyone. My name is Kulsum Bano, and I am representing a seminar on the topic PCR and its application in the field of clinical microbiology. I have joined the Malviya Mission Teacher Training Center program, that is on online 15th faculty induction program that will be accomplished between 23rd June to 19th July 2025. 25. I am current role. I am working as an assistant professor at ERA Institute of Allied Health Sciences and Research, ERA University, Lucknow, UP. The core outline of the introduction of the presentation is starting from the introduction of PCR, the principal and key components, standard PCR workflow, what are the very different variants of PCR, their clinical applications in microbiology. Along with the clinical applications, a few case studies will also be involved. What are the advantages and limitation of using PCR in the clinical microbiology laboratory? In the introduction to PCR, we all well know about the PCR. During the COVID time, uh, it was on the high peak polymerase chain reaction. This PCR totally works on the DNA of a particular organisms. इसमें हम लोग को कोई भी सैम्पल टाइप का होता है, कुछ भी होता है, इन द फील्ड ऑफ द डायग्नोस्टिक्स एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी वी रिक्वायर्ड द DNA of that samples, and we after isolating the DNA, the PCR machine runs. So the basic principle of the PCR, it's a molecular techniques, means the molecules will be involved like the DNA, RNA, and the DNA and RNA. What since the DNA, RNA are remain in a very minute amount, so that we need to be exponentially increased. The PCR works on the exponential amplification of specific DNA sequences. It was invented by Carey Mullis in 1985. This is a basic fundamental tool for detecting and characterizing pathogens, since different pathogens like microbes and fungi, microbes in bacteria, they have different gene sequences. So isolating that DNA and amplifying the gene sequences is very much important in detecting that particular pathogens. This is PCR, its high sensitivity and specificity make it dispensable for pathogen detection, genetic analysis, forensic testing, and many other applications. The principle of PCR: any machine which is working on any particular molecular techniques, it will be have some principle. Like principle means what we required, how it works, how it is converting the DNA sequences and generating the results. The method relies on the polymerase chain method relies on cyclic temperature variation changes. What it happens, सबसे पहले DNA का क्या होता है, they get denatured, उनको denaturation हो जाता है of double stranded DNA. Denature the breakdowns of the two helical structure, जो DNA होता है वो breakdown हो जाते हैं single helical single structure, single strands. We get the single strand, फिर single strand से उसकी doubling होती है, copy बनती है, ठीक है. And that happens by using the nitrogenous bases, enzymes and buffer systems. So पूरे reaction complete होने के लिए temperature variation होता है. Temperature variation starts what the temperature is, किस स्टेप के लिए कौन सा टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, एंड वो रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है. दैट्स ऑल इंक्लूड इनटू द प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर. द होल प्रिंसिपल इज डिवाइडेड इनटू 3 सब parts. First is denaturation, that's where the temperature is between 94 to 96 degrees centigrade. Then annealing means temperature now cools down from the 95 to 50 degrees centigrade. And after that, the extension means the number of copies of DNA are synthesized now, and their extension is now doing. The temperature required for extension is 72 degree centigrade.
Okay, so basic principle of PCR is to doubles the number of target DNA molecules. व्हाट आर द बेसिक की कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर आर रिक्वायर्ड की कंपोनेंट्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बेसिक चाहिए होता है जिसको यूज़ करके हम एक पीसीआर मशीन को रन कर सकते हैं, पीसीआर को प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए कर सकते हैं। वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए होगा, व्हाट डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड देन डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द सेल्स लाइक जीनोमिक है, डीएनए फ्रैगमेंट है, प्लाज्मिड है, वायरल आरएनए है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सोर्स ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स, either it is a virus, either it is a bacteria, either it is the that sputum sample, blood samples. so उसमें से डीएनए आइसोलेट करके उसके फिर डिजीज वो किया जाता है, ठीक है। Then the second is required the primers, reverse and forward, DNA polymerase, DNTP means nitrogenous bases, and buffer with magnesium ion. Here you can see the whole workflow of a PCR machine starting from the different types of samples means ये दिखाया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि the sample was collected from the nasopharyngeal swabs with the by using the nasopharyngeal swabs sample collect किया जाता है, sample collect करके फिर उससे आपका collected sample से DNA isolate किया जाएगा, DNA isolation with the पूरा process steps होता है, DNA isolate then RNA extraction, उसके बाद से फिर आपका क्या है RT-qPCR means here in the samples the RNA are extraction करने के बाद से RT-PCR प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वहाँ पे RNA से DNA की सिंथेसिस होती है, यूज़ करके फिर उसको एम्पलीफाई करके डिजीज़ डायग्नोस की जाती है, ठीक। सो द होल स्टेप्स ये पूरा प्रोसेस होने में एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 आवर्स लगते हैं। पीसीआर वेरिएंस किस पे डिपेंड करता है, वेरिएंस मीन्स हुआ कि एक आपका जो पीसीआर इज अ जर्नल कॉमन एप्लीकेशन, कॉमन टर्म, कॉमन मैकेनिज्म, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे स्टार्ट हो रही है, टेम्पलेट क्या है आपका, किस टाइप का एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, व्हाट इज़ द सैम्पल सोर्स, सैम्पल क्या है, उस सैम्पल्स के जीन को आइडेंटिफाई करना मीन्स कि उसको फिर एम्पलीफाई करना कितना टाइम लगेगा, कितना अमाउंट में रिक्वायर्ड है, हमारे पास सेल्स कितनी है, सोर्स ऑफ सैम्पल कितना है, क्या चीज़ें, वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो पीसीआर वेरिएंट्स डिपेंड अपॉन reverse transcription for RNA viruses, real-time quantitative PCR, then multiplex PCR for simultaneous detection of multiple targets, nested PCR for enhanced sensitivity, digital PCR for absolute quantification. ना कम टू द क्लिनिकल एप्लीकेशन, हमको ये कैसे पता चलेगा कि कोई एक पीसीआर मशीन है वो किस किस उसका क्या क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन से कैसे कैसे वो उस पर काम कर रही है, ठीक है। तो क्लिनिकल एप्लीकेशंस में सबसे पहले आपका आ जाएगा पैथोजन डिटेक्शन द बेसिक मोस्ट, क्यों हम करते हैं, क्यों हमारा होता है सैम्पल कलेक्ट करके, हमारा सबसे बेसिक पर्पस होता है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए कि व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट, कौन सा किसकी वजह से हो रहा है, पैथोजन क्या है, किस वजह से हो रहा है। तो पैथोजन डिटेक्शन इज़ फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। पैथोजन डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस जो है उसको टारगेट करके आइडेंटिफाई करके। तो ये पैथोजन डिटेक्शन में पीसीआर बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज द जीन आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन for bacterial, viral, fungal, parasitic pathogens directly from clinical samples. Examples in case of the Mycobacterium tuberculosis, detection of Mycobacterium, then diagnosis of viral infections such as HIV, hepatitis B, C, SARS-CoV-2, fungal pathogen detection, Candida and Aspergillus, parasite detection, identification, Plasmodium species, then direct testing on diverse samples type, contribution to rapid outbreak because it provides
it provides the results within 3 to 4 hours. same day results means if we have get the blood sample, अगर हमारे पास कोई blood है, उस blood में आपका कौन सा pathogenic organism present है, we can tell by simply doing this PCR technique. Another application is the antimicrobial. This is an emerging field of PCR targeting gene sequences for to identify the antimicrobial resistant genes in a particular organisms. इसमें करते क्या है क्योंकि since we are working on the genes, on the DNA, on the molecules within so it will be easy to identify the resistance genes and for surveillance of carbapenemase genes, genotyping for epidemiological tracking, guiding targeted therapy and infection controls. The second application and emerging in the recent techniques is the genotyping and strain typing. What is the use of the genotyping? Means the DNA sequences are now isolated. We will identify the what the particular sequences are working as a required and for antimicrobial resistance, as microbial resistance, outbreak investigation and source tracking. It will be genotyping is very much important for outbreak, like in case of the SARS-CoV-2 में what the variant is currently affecting the people, so the PCR is very much important in identifying the what is the variant is there, the identified on the basis of the PCR, monitoring transmission dynamics. Now come to the case study with the example of how the PCR is working. Two examples are there. पीछे जहाँ से बताता है कि क्या क्या इसके applications हैं, तो उस application में उसके applications में जो है आपका वो है कि जैसे case studies में जैसे कि case study first case is tuberculosis diagnosis. Hello. The case study is the first case study is the identification of the Mycobacterium tuberculosis diagnosis. Means what the sample type will be sputum from suspected TB patient. Method what the method will be real-time PCR targeting the IS6110 element. Then positive application within 2 hours. Means this indicates that if the sample is positive for the MTB, then we can get the result within the 2 hours. Otherwise in the manual methods it takes weeks to identify whether the causative agent, the pathogen is present or not. So positive amplification can be done from the sputum within 2 hours. Impact prompt initiation of anti-TB therapy and reduce transmission risks. We can start prompt means you can start if there is a positive samples. The other case study SARS-CoV-2 detection, this also required very much rapid diagnosis is also required in the case of the SARS-CoV-2 infection. What the sample type is there, nasopharyngeal swab, RT-qPCR targeting NNR1AB genes were required to target. Means if we have the viral sample, well samples means the patient which is positive for the patient which are having the symptoms of the COVID, then take the nasopharyngeal swabs, isolates the swabs. Since swabs from the swabs, that viral swabs, the sample is collected, DNA isolated, from that DNA gene sequences, the targeting sequences ORF1 app genes. Result, what will be the result? Quantitative viral load for disease monitoring, what amount is present, and then impact, inform patient isolation and treatment decision. Now come to the advantages of PCR in clinical microbiology. Since we have given here two case study, one is where
जहाँ पे आपको ये दिखा था कि रैपिड डायग्नोसिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एंड द सेकेंड इज़ वेयर SARS-CoV-2 वेयर ऑल देयर ऑल्सो रैपिड डायग्नोसिस इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड, सो इट इज़ क्विक, रिलायबल, वेरी मच सेंसिटिव। क्यों? क्योंकि कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, रिलेटिवली easy in comparison to the other manual methods approach, and specific for a particular disease, and sensitivity is very high, rapid turnaround time, within you can get the result within 2 to 4 hours, low sample requirement, versatility for DNA and RNA targets, quantitative capabilities with qPCR. What are the limitation and challenges? Limitation and challenges are like that कि in using the PCR, what are the limitation, क्या challenges face करने थे? The basic is risk of contamination leading to false positive, means if while collecting the samples, अगर sample collect करते time, transmit करते time आपको ट्रांसमिशन सैम्पल के ड्यूरेशन में या कुछ भी कोई भी चीज़ें हैं, अगर आपने उस टाइम पे सैम्पल कंटामिनेटेड हो गया है तो रिस्क ऑफ फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। रिक्वायर्स specialized equipment and trained staff, PCR inhibitors in some sample types, limited multiplexing compared to sequencing, cost consideration for routine use.